Rashmika, why she is horny, I don't know. From Animal. Yes, from Animal. She is just playing horny vibe. बहुत underwhelming है. Like one of the worst intro मैं बोलूँगा. This movie is one of the few that I can say that the second part is much better than the first part. खास करके वो जो एक feelings करके song आया हुआ है वो तो क्यों है नहीं पता. Hey guys, welcome back to Talabari. This is Kamyan with Myanmar. Today we're giving you the review of Pushpa 2, The Road. Yes. So this movie is directed by सुकुमार. स्टोरी जो है मूवी का वो कंटिन्यू होता है पिछले पार्ट से. पुष्पा का अब रूल स्टार्ट हो गया है. He is the head of the syndicate. अभी वो पॉलिटिक्स में भी एंटर कर रहा है. इनडायरेक्टली यू कैन से लाइक he is a king maker. उसका श्रीवल्ली का जो केमिस्ट्री है, उनका लाइफ कैसे चल रहा है पर्सनल लेवल पे. फिर उसकी मम्मी का जो स्टोरी है उसका क्या स्टोरी चल रहा है, उसके जो रिलेटिव्स है जो उसको सरनेम नहीं प्रोवाइड किए हैं जिसके लिए वो फाइट कर रहा है, उसका क्या, वो सब एक धीरे धीरे सब इंटरकनेक्ट होते जाता है और एंड में वो कनेक्ट होगा सब. अपन कुछ रिवील नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ा स्पॉइलर हो जाएगा. ये बेसिक सिंपल सा प्लॉट है. One thing is there that I can say, this movie, it is very different from the first one in the sense that this movie is more story driven. Here we can see more depth of the characters. Either it is Shrivalli or Pushpa. We see more the human side that Pushpa has, or other than just being fire. In many parts you'll be able to identify yourself or at least someone you know either in Pushpa or Shrivalli. So that thing I'll say they did very well, that they created that connection that was lacking in the first movie. Here Fahad Fasil, it was very unexpected the way he played the role, because usually what happens, movies follow a certain pattern. So it is usually he appears in first, then he disappears, and then he'll come before the climax, and then after the climax he will be the hero against the villain completely. Here it is not like that. Fahad Fasil is generally involved a lot in the plot. His acting, there's no need to say that. If you have seen other movies from him, you know he's amazing. But the way they also interconnected the villains, the story, not only the hero family and everything, but the villains that we will have and that we will see also in Pushpa 3, they all get connected slowly, and it is so well connected. Generally, hats off to how they Sukumar. Hats off to Sukumar because he is the one who writes the script and everything. To not leave so many loopholes, considering that this is Indiana mass masala movie, that they put the time and effort in this. जो भी चीज वो लोग दिखाया ना स्टोरी से रिलेटेड, वो सब लॉजिकल है. कहीं पे भी आपको नहीं लगेगा ये क्या दिखा रहा है. और रहा बात फहद फासिल का, उसका एक्टिंग जो साइकोटिक टाइप का विलन होता है ना, उस टाइप का उसका है रोल इसमें. ये नहीं कि वो उड़ रहा है इधर से मार रहा है या किसी को, नहीं. टेंशन आता है दोनों का जब भी कन्फ्रंटेशन होता है, जो टेंशन क्रिएट होता है आजू बाजू में, वो आपको फील होगा. The major part of this movie is everything. Either it is a hatred or it is love. It will get connected to you also. You will feel that thing. Negatives में अगर हम लोग जाएं, सबसे पहला इसका माइनस पॉइंट जो आता है वो है इसका सॉन्ग्स as compared to the first part. Yes, exactly. हाँ, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें गाने की वजह से मूवी हिट हुआ था actually. I can say that there are two songs that I actually like. They're back to back. One is when Pushpa is in this attire, he dances for the goddess, and after that, another song happens that it is basically the upgraded version of Sami. Yes, exactly. The love that Shrivalli has for her husband, it shows like that. But यहाँ पे थोड़ा सा लेट डाउन है, खास करके वो जो एक फीलिंग्स करके सॉन्ग आया हुआ है वो तो क्यों है नहीं पता. मतलब वो जो पूरा पार्ट है ना, वो इजीली एडिट आउट हो सकता था. Yes. इजीली एडिट आउट हो सकता था. एक स्टार्टिंग जो इंट्रो फाइट सीन है अल्लू अर्जुन का, वो बहुत अंडरवेलमिंग है. लाइक वन ऑफ द वर्स्ट इंट्रो मैं बोलूंगा. कोई जरूरत नहीं भाई वो इंट्रो सीन, मतलब इतना फालतू है ना. ये कमीला बोली ना, I told him, Amar, this is looking like these old Chinese movies that they used to play in TV. That the guy is just jumping from here to there and the way he flies and everything. They did that part with these Japanese people. Generally, it has no head or toes, nothing. There's no point in that. It is just they show it is a nightmare that he had. We were hoping that in between in the movie they will connect this part. तो ये दिखाया कि नाइटमेयर में उसके बचपन का था, पर उसके पहले जो फाइट दिखाया वो भी इतना लंबा. वो ना तो पास्ट है बोला, ना प्रेजेंट है बोला. क्यों था? And he's talking in Japanese. मतलब it is in the limbo. लिम्बो में था. वो एक कम से कम 15 से 20 मिनट का सीन है वो. I think so 15-20 मिनट तो था. Yes, it was very 15-20 मिनट का था. फिर जो श्रीवल्ली मतलब Rashmika, why she is horny, I don't know. From Animal. Yes, from Animal. She is just playing horny vibe.
whenever he's there, she gets feelings and she feels something down and she wants sex. Like the guy is just touching her. Like if you watch his song Feelings, and that I will say looks like this Bhojpuri songs. It looks very similar, except that obviously the heroine is not like. And the dance steps. Yeah, and the dance steps and all, but still, like you have two really good dancers, and wasting the time in like shaking the boobs and all this stuff, and the guy just putting nearby and bouncing on the chest. It is like, I don't understand why they spoiled the love that these Shrivali and Pushpa are supposed to have. Love is not only about being horny for each other. Like, if a guy touches your feet, like just touch a little bit, then you'll get completely horny and then you have to fuck in the kitchen. I don't get that. और वो पार्ट भी मैं थोड़ा सा उसमें और ऐड करना चाहूंगा जो कामी बोली है अभी. वो सीन ऐसा है कि उसका सिंडिकेट का मीटिंग चल रहा है. इन बिटवीन शी गेट मॉन्ड्री, शी गो, शी कॉल दिस अल्लू अर्जुन, दे हैव सेक्स. वो पार्ट का क्या लॉजिक था नहीं पता. मतलब काफी सारा सीन ऐसा है ना कि आप बोल सकते इजिली 30 मिनट मूवी का कट हो सकता था. क्यों वो सब सीन डाला गया नहीं समझ में आया, क्योंकि अच्छा खासा स्टोरी है, कहीं पर भी डिप नहीं होता है मूवी, बट ये अननेसेसरी फिलर डालने का जरूरत नहीं था. अदर देन दिस, इवन द किसिंग सॉन्ग वाज लॉजिकल बिकॉज इन द लास्ट पार्ट आल्सो यू वांट व्हाट हैपेंड व्हेन celebration was going on. Here also it is the same thing. They connect very good. I'll say कि वो बनता है जो भी होता है, मैं नहीं बोल सकता वो, इसलिए वो सेलिब्रेशन होता है. किसी का मतलब होता है क्लिक. Earlier we were thinking it is kiss, but नहीं, it is click. They are talking about taking picture. Yes, the click of the picture. तो हिंदी डबिंग नहीं पता क्या किया है, हम तो तेलुगु में देखे हैं भाई, उसमें तो प्रॉपर बता रहा था मीनिंग सबटाइटल में, हिंदी में नहीं पता क्योंकि. And in the story they also explain like as the movie is going on before the related है वो part. It is like related है वो. Yes, so it is not just randomly. Only thing is that like people, I read the comments when the song came out, and generally it doesn't give the same feeling as the early movie, and it happens sometimes, but for me it is more important that the story is good and that you will actually get like into whatever is happening and that you will not forget it, and then you get the people, no, go watch it, it is much better. देखो अभी इसमें अगर अपन बोले पीक मोमेंट जो है मूवी का, एक तो क्लाइमैक्स है, मतलब प्री क्लाइमैक्स बोल सकता हूं मैं. इट इज नॉट क्लाइमैक्स प्रॉपर्ली, इट इज प्री क्लाइमैक्स. देयर इज वन एक्शन सीन, वो एक है. फिर बीच में एक और है इंटरवल के पहले वाला. ये दो जगह मूवी एकदम पीक में जाता है और कुछ कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं कि आप सिटी विटी मारोगे. और एक रश्मिका का भी एक पार्ट है काफी इंपॉर्टेंट, वहां पर भी आपको ऐसे फील हो जाएगा अंदर से. उसके अलावा बोले तो जो एंडिंग है बहुत एब्रप्ट है, मतलब काफी एब्रप्ट एंडिंग है. You will not expect that movie will get over. We will be waiting for अरे अब कुछ होगा, अब आएगा. Whatever you are expecting in the climax, you will not. Yes, it is a completely different climax from whatever generally everyone is expecting. And the thing here is that I find it logical the way they left it for the third part. I love that they didn't do any post-credit scene. It is the scene and the credits are rolling in between the scene. That I love it completely. और बहुत fast था वो. Yes, it was so good the way they did it. Generally, overall, if we check the movie, yes, it is a masala movie. Yes, the action scenes are a bit over the top, but that is the point of sometimes watching. No, it is not bit over the top. It is too over the top. It is too over the top. मतलब it is brain इधर रख दो, चलने दो, मजा लेने दो, देखो बस. The thing is that it is for enjoyment. That part. अब थोड़ा ज्यादा हो गया, मतलब बहुत ज्यादा हो गया. पहले भी होता है बट इसमें कुछ सीन तो ऐसे करे बस ये क्या है. वो उड़ रहा था वो लिटरली उड़ रहा था वो इधर उधर. तो वो कुछ पार्ट है जो आप इजीली स्किप कर सकते हो. मतलब अगर आप क्रिटिसाइज करने बैठोगे ना अगर मूवी को, इग्नोर फिजिक्स, स्टोरी पे ध्यान दो. और जो एंडिंग है और उसके आगे का जो एक्साइटमेंट लेवल है आफ्टर बाहुबली एंड केजीएफ एंड विक्रम, देन वी कैन से कि हाँ अब आगे क्या होगा. ये जो है ना एक्साइटमेंट, एटलीस्ट विक्रम में तो ये भी था कि हाँ चलो खत्म हो गया, रोलेक्स आएगा. इसमें ये है कि जैसे बाहुबली सडनली खत्म होता ना कि कटप्पा जब मारकर मूवी खत्म हो जाता है सडनली, और केजीएफ में जब रॉकी भाई गरुड़ा का गला काटकर मूवी बंद हो जाता है, सेम वैसा फीलिंग यहाँ पे आएगा कि बोलेगा अब कुछ होगा और मूवी बंद हो जाता है. Yes, and our cast that we will have for the next movie just keeps growing and growing. Pushpa, generally you will think that how he will survive with this many challenges, and the new villain that we will have, he is very powerful. Yes. He's super powerful. Yes. So generally I'm worried how it will be. It is kind of similar to KGF villain. थोड़ा सा hint दे सकते हैं.
KGF में भी जो एकदम पावरफुल विलन हुआ था, अधीरा नहीं बोल रहा हूँ ना, दूसरी वाली फीमेल विलन जो थी। You're giving too much spoiler. अरे they will understand. They show in the trailer already. This जगपति बाबू, so it is fine. But overall मूवी बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है। क्यों हम जबरदस्ती, क्योंकि मैं तो बहुत स्केप्टिकल था भाई मूवी रिलीज के पहले। मैं तो कंप्लीटली नेगेटिव में ही चला गया था कि पक्का ये पिक्चर पिटने वाला है, फालतू रह गए, बट नहीं। सुकुमार proved us wrong and we should believe that when people were saying that Sukumar did usually he did a very good job in every movie and finally he delivers it. Yes. Yes. We're very happy to be proved wrong. Generally, it is not like we want movies to go wrong, but we want to be proved wrong that yes, this movie will be good. Because in the end, it's for the benefit of everyone. Go ahead and watch it. If you miss, if you miss the first 20 minutes, don't worry. There's really nothing much that you're missing. You go after half an hour straight. Yes, there's nothing you're missing. If you go fine, you'll just watch a very long ass conversation in Japanese. So it is fine. Yes. With that, what is your rating? 3.75. I'll not be like him. I'll give it a straight 4. No, I will not give it. In my case, I'll give it 4. They improved a lot. Yes. We can only wait generally for the next part. You guys let us know in the comment section what you think. With that said, remember to subscribe, like, and share. See you next time.